what are these lyrics? At least the beat is nice. Okay. Okay. I think I'll probably get cancelled for saying this. Because I know how die-hard fans behave, but the lyrics are not giving, guys. The lyrics. What does it mean? इस क्या starting वाला क्या था? क्या था? एक मिनट. Let me just go back. ले लो इसकी ले लो उसकी ले लो मतलब फोटो ले लो बट और फिर द होल सॉन्ग इज अबाउट फोटो. अगर मेरी फोटो मेरी लो बट अगर तुमने फोटो स्प्रेड किया तो मैं थप्पड़ मारूंगी. राइट मतलब ऐसे लिरिक्स मुझे याद भी नहीं. लॉकर में रख लेना ऐसा कुछ था. अगर किसी की नजर पड़ी फोटो में तो सुन थप्पड़ मारूंगी. Yeah, I think we were waiting for Ooh Antava part 2. Like, I know, देखो, I understand कि comparison करना ठीक नहीं है, but comparison तो होगा ही, because 3 के केस में भी the same thing happened, right? कि कमरिया and आज की रात, मतलब जब आज की रात आया था, people were like कि हाँ, it has to be as good as कमरिया, and then आज की रात came in and yeah, people were blown away, and yeah, I mean, 3-2 pulled it off. I mean, the 3 makers pulled it off, but here, so I think similar expectation था. मेरा तो बिल्कुल था. Ooh Antava, I mean, it's like a banger, and Samantha looked absolutely amazing. I'm sure Sheila probably would have killed it in the choreography, क्योंकि choreography दिखाई नहीं, it's a lyric video, तो मैं पता नहीं है. But I remember जब पुष्पा release हुई थी, of the first one, और Twitter was full of Samantha praising कि भाई this was like a big surprise. Expect नहीं किया था किसी ने ये गाना, and everybody was like shook, and people were like भाई क्या गाना है ये. So I think now, so understand the hype, guys. Understand where I'm coming from as a listener, as a viewer. Beats मुझे ठीक लगे, beats are fine. The dancey number है, so I understand कैसे beats create. But the lyrics are, I mean, to put it very mildly, not good. And if I have to put it very harshly, utter crap would be the words. What are थप्पड़ मारूंगी अगर फोटो. What are these? I mean, what is the context? I don't know. ठीक है, अब we don't have to concentrate इतना, क्योंकि वो बोलते हैं ना आइटम सॉन्ग्स में लिरिक्स इतना मायने नहीं रखते, ऐसा बोलते हैं जनरली. आई एम सेइंग, बट यार ठीक है, अगर मायने नहीं भी रखते तो आई मीन इतना भी मायने नहीं रखते कि दैट यू विल राइट एनीथिंग, राइट? बिकॉज just you cannot just rely on beats. There has to be something, so that there has to be some hook. Even if entire song is having sare ga ma pa only and no context, but at least जो hook वाला part है वो तो has to be something very catchy ना. I don't want to sing थप्पड़ मारूंगी ये थप्पड़ मारूंगी. I mean, guys, is it just, maybe it's just me, हाँ? Maybe you'll bash me in the comments saying कि क्या तुमको कुछ नहीं समझ आता. अच्छा ठीक है, नहीं आता बाबा, but I don't know. Like, I don't feel anything. I was so pumped. जैसे beat start हुआ, I was like so pumped. ये मतलब finally, and this was, I don't even know if I should post the reaction. Shit. मतलब I feel कि मुझे ऐसा लगता है जब मैं edit पे बैठूंगी तो the facial expression will just go down from wow till like to utter disappointment. I don't know. And what was that line? Morph करा के अगर तूने मेरी फोटो morph कराई तो मैं थप्पड़ मारूंगी. The second verse में जो था, what was that? Like what? Yeah, it's not funny. It's not funny. The lyrics are not giving at all. मतलब मुझे माफ करो अगर आपको बहुत पसंद आया ये गाना, आपको ये गाना मुबारक हो, but I think मतलब I don't know, my expectation was sky high for the, और मुझे पुष्पा राज वो गाना, I really like that song. That song had so much to offer. And I don't know what are the Telugu lyrics. If they are same, please let me know. But Hindi वाले तो मतलब are just rubbish, utter nonsense. They don't make any sense. क्या मतलब they don't make any sense. Oh God.
आई डोंट लाइक, मेरे को सच में नहीं पसंद. व्हेनेवर आई सिट फॉर अ सॉन्ग रिएक्शन आई ऑलवेज फील कि मुझे हमेशा एक पॉजिटिविटी में, यू नो, अगर मुझे ठीक भी नहीं लगा तो उसको भी मैं एक पॉजिटिव लाइट में प्रेजेंट करूँ, बिकॉज आई डोंट लाइक बीइंग डिसअपॉइंटेड इन सॉन्ग्स. बिकॉज गाने पसंद करना बहुत सब्जेक्टिव होता है. तो इफ आई डोंट लाइक इट, आई ऑलवेज फील कि नहीं यार, चलो इस कॉन्टेक्स्ट, शायद इस रीजन के लिए मुझे बिल्कुल ही नहीं पसंद है, तो ठीक है, देयर इज स्टिल सम सेविंग ग्रेस हियर. बट यार ये गाना, वेयर यू नो देयर इज सो मच हाइप फॉर अ सॉन्ग, मतलब दिस मूवी इज सो मच एंटिसिपेटेड. मैं तो देखना चाहती हूँ कैसे कंक्लूड होता है ये फिल्म. एंड फर्स्ट वाले के गाने इतने बढ़िया है. सो फ्रॉम दैट एल्बम देन वी गेट अ सॉन्ग लाइक दिस इन द सेकंड पार्ट. नहीं यार, मेरे को तो है डिसअपॉइंटमेंट. मतलब ऐसा ही होता तो यार मैं एक्सपेक्टेशन ही ना रखूँ फिर किसी चीज से. आई फील दैट. सो या आई डोंट नो इफ आई, maybe I'll not post the reaction, I'll probably edit. I don't know when I'll sit for editing. If you're only watching the review part, then please understand how much I don't want to post the reaction, because it's just, yeah, I mean it's just what it is. हो गया बस. अब इसमें ज़्यादा क्या बोलना है. We'll just wait for, I'm just hoping the redeeming savior for the silver lining is the choreography. वो बाद में पता चलेगा जब हम मूवी देखेंगे. We'll see. You guys let me know your thoughts. Maybe you are a big fan of this song. I don't know. आप बताओ. So I'm gonna sign off now. And I will see you soon on my next video. Bye.